So very good evening class. Today is the class of MCQ class number 26 of the UGC-NET paper 2 Mass Communication and Journalism. So here we will start with the questions number 219. So according to the Charles Peirce, sign stands for its. चार्ल्स पियर्स का आपने सुना होगा. चार्ल्स पियर्स के अनुसार साइन स्टैंड फॉर इट्स व्हाट. Okay, so that you have to give the option, you have to give the answers. So here the options are need, correction, C, deviation, D, object. Everybody answer it. According to the Charles Peirce, sign stands for its what? Everybody answer it, right? Very good. Conceptual questions, right? Okay. Sorry, it's the right answer. That is what? D. It is very good. D जो है आपका right answer है. That is object. Okay. First times it is what? The D object. So this is what the according to the Charles Peirce sign stands for its objects. So Charles Sanders Peirce was an American philosopher. Okay, remember it. American philosopher. Yes, known for the Semitic model. Also the known for as the father of pragmatism. Okay. In the Peirce theories of science, science is something that stands in a well-defined kinds of relation to two other things, like its object and its interpret sign. Okay, first जो है आपका that is object and second that is interpretant, right? Interpretant sign मतलब कोई भी एक साइन है या सिंबल है वो एक एज एन ऑब्जेक्ट दैट वी कैन स्टडी हियर एंड दैट उसको लेकर जो इंटरप्रिटेशंस हो रहा है that is what about the interpretant sign, right? So that is what here a sign is something that stands in well defined kind of the relation of two other things, right? Relation to two other things. That first that is object, like mobile is icon के आप देखते होंगे, that is icon, that is what a computer icon, my computer icon or anything, that is what a symbol, and that is what object you can see that. And another thing that is about the interpretant sign, right? So this is what the two things here it is important that given by the Charles Peirce, that is what kind of the two other things well defined kind of the relations about the sign, that is of the two other things, that is one is object and second is interpretant, right? That you have to remember. So दोनों चीजें आपको याद रखनी है, सिर्फ एक ही चीजें नहीं कि ऑब्जेक्ट साइन इज स्टैंड्स फॉर इट्स ऑब्जेक्ट, बट और व्हाट द अदर थिंग्स इट इज दैट. क्या दूसरा क्या चीज है जल्दी से बताएंगे, आंसर्स में लिखेंगे सो दैट यू कैन रिमेंबर. एवरीबॉडी interpretant sign, right? Very good. Interpretant sign is the another thing, that is what the two other things that given by the Charles Peirce, right? So what is here? In one of his many definition of a sign, Peirce writes, I define a sign as anything which is so determined by something else, call its objects, right? Charles Peirce कहते हैं कि I define a sign as anything which is so determined by something else, that is called its objects, and so determines an effect upon a person's, which effect I call its interpretant, right? So दो चीजें यहाँ पर उनका जिक्र है. क्वेश्चन से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स पियर्स, राइट, व्हाट kind of the relation of what kind of relation to two other things it is, right? So that is they will give you the answer, or the other than object sign as object, तो वो क्या है? Interpretant sign, right? So that is what here clearly defined. It is that Charles Peirce define करते हैं कि I define sign as anything that is what determined by something else. This is what the object number one, and so determines an effect. इसका जो effect है that is what about interpretant, right? So ये आपका क्या है? Second. That you have to remember. And the later that thereby immediately determined by the former. Okay. बाद में इन्होंने that is what by the former term. So this is what here important about the sign, that is object and interpretant. ये दोनों चीजें याद रखनी है. चलिए next question number 220. When communication is studied,
The number of labels of the problems identified by Shannon and Weaver are. ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस है. जब कम्युनिकेशन की स्टडी की जाती है, द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड बाय द शैनन एंड वीवर. जल्दी से बताएंगे शैनन एंड वीवर ने कितने लेवल्स ऑफ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया था? 2, 3, 4, 5. एवरीबॉडी आंसर. दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. When communication is studied, the number of levels of problems identified by Shannon and Weaver. Very good. Yes. Rachna Abhishek has answered. Varnika has answered. That is what 3, right? So that the right answer. 3 जो है वो आंसर से आपका. Shannon and Weaver identified 3 levels of the problems. वो कौन कौन सा लेवल है? First, that is technical level, right? पहला जो है level, there are 3 levels of the problems of the communication according to the Shannon and Weaver. That is, they are technical problems. Second, that is semantic problems. Third, that is effectiveness problem. Okay, so that is first. Here I am writing the technical problem. First जो level of problems है Shannon and Weaver ने identify किया है communication के अंदर. That is what the first it is technical problem. So technical problem that it is how a channel causes a problem. Channel कैसे problem create करता है? That is what I heard. That is technical problem. The noise जो concept था वो channel से ही निकला था. That is what here the how a channel causes a problem. Second thing it is that semantic problem. What about the semantic problem? Is the meaning of a message sent and received very different? जब सेंडर के पास इंफॉर्मेशन सोर्स किससे जब रिसीवर के पास जब पहुंचा मैसेज, तो हमें आज भी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में क्या होता है, अच्छे से सुनाई नहीं देता है, राइट? व्हेन वी सी द मोबाइल नंबर, हमें 2 बार 3 बार 4 बार मोबाइल नंबर को रिपीट करना होता है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में, तभी जाकर क्या होता है, हमें सामने रिसीवर वालों को अच्छे से क्लियर हो पाता है. दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द मैसेज एंड meaning of the message that sent and received very different. That is what here the semantic problem, it is about the message, right? The third thing it is about, तीसरा क्या चीजें हैं? Effective, right? The third thing it is about effectiveness problem. That is how effectively does the message causes reactions. ठीक है? Feedback, there is no feedback in this model, so that is how effectively does the message causes the reaction. That is about talking about the effectiveness, means the feedback. Okay, so what the यहाँ पर अगर मीडियम की बात करेंगे, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के से बात करेंगे, तो टेक्निकल प्रॉब्लम में कौन सा एलिमेंट जो है जिसकी जिक्र की गई है? एवरीबॉडी, व्हाट हियर दैट वी हैव टॉक्ड? यस, दैट इज चैनल की बात की गई है, राइट? वेरी गुड. Channel or the medium here that it has been talked, right? Second में बताएंगे semantic problem में किस element की बात की गई है? That is message, right? Very good. That is message. And third में that in the effectiveness problem, what the element has been talked here? Yes, that is feedback. Okay. So this is what the label of the problems that identified by the Shannon and Weaver are 3 labels. ठीक है? 3 लेवल को उन्होंने आइडेंटिफाई किया. 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया. वो हमारा प्रॉब्लम था टेक्निकल प्रॉब्लम, सिमेंटिक प्रॉब्लम और इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम. ओके, क्लियर है? जल्दी से बताएंगे. इट इज ऑल क्लियर? एवरीबॉडी शुड बी क्लियर. ओके, नहीं क्लियर है दोबारा पूछेंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 221. Ferdinand de Saussure was in his analysis concerned only with, right? We have many times discussed about the Ferdinand de Saussure was, that is in his analysis concerned only with the indices, entropy, associations, symbols. Everybody जल्दी से आंसर करेंगे. Very easy questions. Many of the time we have discussed with the Ferdinand de Saussure. Okay, that is very much important personalities that in his analysis
concerned only with the right option here it is, that is symbols. Okay, very good, absolutely. So here Saussure believed that semiotics is concerned with everything that can be taken as a sign. He called it semology. Okay, so Ferdinand theory, Saussure given the term that is semology, okay, or the semiotics that is concerned with the symbols, right, or the signs, symbols or sign, okay, sign or symbols that can be also considered as signifier and everybody, what the other thing it is? Signified, okay, yes, very good. Signifier and signified, that were the term that given by the Ferdinand de Saussure, that he talked about the sign and symbols, right? चलिए, very good. उन्होंने बस यही कहा कि सेमोटिक्स जो है दैट इज कंसर्न्ड विद एवरीथिंग. सेमोटिक्स ही सबसे बड़ा कम्युनिकेशन है और ये सारी चीजों को कम्युनिकेट करता है. ईच एंड एवरीथिंग इज दैट इज कम्युनिकेटेड बाय द सेमोटिक्स. दैट इज व्हाट इट इज, एवरीथिंग, राइट, विच इज कंसिडर्ड एज ए साइन. ओके, चलिए एंट्रोपी का बताएंगे. दैट हु गिवन द टर्म एंड और कंसर्न्ड ओनली विद द एंट्रोपी. Name the person or the personality that is associated with the entropy term or the given the term entropy. Everybody. No, it's not the Marshall McLuhan. जल्दी से बताएंगे. Entropy and the redundancy. जल्दी से everybody. Yes. No, it's the Wilbur-Schramm. Okay. Very good, Tendril. Wilbur-Schramm. Right answer. Okay, chaliye, yes, exactly. Next question. Common sense assumptions are preferred to read meanings in the media masses by. Common sense assumptions, please read it twice the questions. Common sense assumptions are preferred to read meaning in the media masses by environmentalists, sociologists, C, technologists, and D, linguistics. Everybody. Environmentalists, sociologists, technologists, or linguists. Everybody answer. No, it's not the D. It's not the D. Other than D, what will be the answer? That is B. Yes, very good. B. B is the right one. So, understand it here, that is common sense assumptions that are preferred to read meanings in media masses, right? So here read the explanation properly. So sociological approach to the communication theory that is based on the assumptions that there exists a definite relationship between the mass communication and the social changes, right? Mass communication and social changes, either radio or the social changes, okay, that is television, that is cinema, or that is newspaper, right? That all the mass communication or the mediums, that is the relationship between is established, the relationship between the mass communication and the social change. That some of the relevant theories related to this is that cultivation theory, social learning theory, agenda setting theory, play theory, uses and gratification theory. In all the theories, सारे theories में आप यही देखेंगे कि medium का effect, medium का relations between the social changes and the medium or the mass communication. That is what the sociological approaches to the communication theory is totally based on the assumptions, right? That is what here the definite relationship between the mass communication and social changes. So here it is what saying that common sense assumptions that are preferred to read meanings in the media masses. Media masses की meaning को समझना और उसको read करना, उसके impact, that is what here, that is what we are considering here, that is by the sociologist, right? Many of the sociologists, either you study or the agenda setting theory of the Malcolm Sa, right? या फिर सोशल लर्निंग थ्योरी और या फिर कल्टीवेशन थ्योरी. ये सारी थ्योरीज में आप देखेंगे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मीडिया मैसेज की मीनिंग्स को समझा और उसके तरीके से रिलेशनशिप, सोशल रिलेशंस को
समझने की कोशिश किया, राइट? सो दैट इज व्हाट हियर द इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज दैट सोशियोलॉजिस्ट, राइट? इट इज क्लियर एवरीबडी? यस, वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन 2 to 3, नेम द चैनल दैट वाज लॉन्च्ड बाय द 14th of March 1945। 1945 में 14 मार्च 1945 को एक चैनल लॉन्च किया गया। उस चैनल का नाम क्या है? दूरदर्शन का वो चैनल है। एवरीबॉडी आंसर इट। डीडी सप्तागिरी, डीडी इंटरनेशनल, डीडी स्पोर्ट्स, डीडी भारती। एवरीबॉडी आंसर, जल्दी से आंसर करेंगे। व्हाट इज द राइट आंसर? नेम द चैनल। नो, इट्स नॉट द डी, अदर देन डी। यस, वेरी गुड, दैट द राइट आंसर, दैट इज बी। बी जो है आपका राइट आंसर है, राइट? डीडी इंटरनेशनल, डीडी इंटरनेशनल को लॉन्च किया गया था 1945, मार्च 1945। ओके, so DD India, an Indian paid television channel that was launched on the 14/1995. Why it is DD India, that I will also tell you here. It is mentioned in the explanations, right? DD India. So as DD International, it was launched on the 14th of 1995, right? It was launched as DD International on March 14, 1995. Okay, which was available in the 146 country. It is now still it is available in the 146 countries throughout the world। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 140 कंट्रीज के अंदर जो है डीडी इंटरनेशनल्स, राइट? सो इट वाज रीब्रांडेड एज डीडी वर्ल्ड। उसके बाद डीडी वर्ल्ड हुआ, डीडी वर्ल्ड हुआ 2000 में। ओके, राइट? और टू डीडी इंडिया हुआ कब? एवरीबॉडी जस्ट रीड द एक्सप्लेनेशंस एंड आंसर इट। यस, 2002 में। वेरी गुड, 2002 में डीडी इंडिया हुआ। सो इट इज ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द दूरदर्शन इंडिया स्टेट ऑन टेलीविजन नेटवर्क। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? सो एवरीबॉडी विल आंसर, जल्दी से आंसर करेंगे, ठीक है? सो ये हमें याद रखना है, इस डेट को क्या हुआ था? दैट इज डीडी इंटरनेशनल, राइट? चलिए, along with me everybody will answer। एवरीबॉडी, कब हुआ था डीडी वर्ल्ड? जल्दी से आंसर करेंगे। डीडी वर्ल्ड कब हुआ? 2000 में। ओके, वेरी गुड। और 2002 में क्या हुआ? एवरीबॉडी, इन द ईयर 2002 में डीडी इंडिया, राइट? वेरी गुड, ये आपको याद रखना है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? सो दिस इज व्हाट दैट हेयर इट इज। दे कैन आस्क यू, दे कैन कंफ्यूज यू, किसी भी तरीके से वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो तीनों एक ही चैनल है, ठीक है? कोई अलग अलग चैनल नहीं है। दे आर नॉट सेपरेट, दे आर वन चैनल। दैट इज व्हाट नाउ इट इज डीडी इंडिया, राइट? इन द 2000 डीडी वर्ल्ड एंड इन द 1945 इट वाज डीडी इंटरनेशनल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डीडी सप्तागिरी के बारे में बात करते हैं। तो डीडी सप्तागिरी इज द विच काइंड ऑफ द चैनल? एवरीबॉडी, did is yes, Telugu channel which was launched in the year 1977। ओके, डीडी स्पोर्ट्स की बात करें तो डीडी स्पोर्ट्स कब लॉन्च की गई? एवरीबॉडी रीड द एक्सप्लेनेशन एंड आंसर। यस, 1998। वेरी गुड। और डीडी भारती की बात करेंगे तो डीडी भारती व्हेन इट वाज लॉन्च्ड? यस, 2002, राइट? विच टेलीकास्ट, डीडी भारती क्या टेलीकास्ट करता है? दैट डीडी भारती टेलीकास्ट वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स and is dedicated to show India's vast culture and traditions, right? So Doordarshan कब आया? When Doordarshan came in the year 1959। Can you say the date? कौन सा डेट था? What was the date? Yes, 15th of September, right? 15th of September 1959 Doordarshan came। Very good। चलिए, so first Indian language newspaper was, ठीक है? पहला इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर बंगदूत, बी समाचार, सी दिग्दर्शन, डी मीरतुल अखबार। नो नो नो, नॉट इट द बी, बी नहीं है।
first Indian language newspaper? Yes, very good. That's the right answer. C. दिग्दर्शन. ठीक है, दिग्दर्शन जो है आपका पहला लैंग्वेज न्यूज़पेपर है. Digdarshan was the first monthly periodical of the Bengal in the Bangla language, which was started by the Sirampur Baptist Mission in the 1818, right? 1818 में बाप्टिस्ट मिशन सिरमपुर के द्वारा यह स्टार्ट किया गया बंगला लैंग्वेज में. ये मंथली पीरियोडिकल न्यूज़पेपर थी. और वहीं पे बंगदूत की बात करेंगे. सो बंगदूत, व्हेन बंगदूत वाज लॉन्च्ड एवरीबॉडी, दैट इन द ईयर 1829. Yes. So Bangdut Weekly 1829 of Raja Ram Mohan Roy, right? Raja Ram Mohan Roy. And Digdarshan, that by the Sirampur Baptist Mission. Okay. Miratul Akbar. Everybody, about the Miratul Akbar, this is the first न्यूज़पेपर इन विच लैंग्वेज. कौन सी लैंग्वेज का पहला न्यूज़पेपर है? यस, द फर्स्ट पर्शियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर, राइट? वेरी गुड. सो मीरतुल अखबार वाज अ पर्शियन लैंग्वेज जर्नल फाउंडेड एंड एडिटेड बाय द राजा राम मोहन राय, राइट? वेरी गुड. सो दिस इज व्हाट द कंफ्यूज दे हैव. समाचार दर्पण, राइट? समाचार इज द एजेंसी. समाचार दर्पण हियर इट इज. So, समाचार दर्पण का बताएंगे. समाचार दर्पण by the everybody. Yes, very good. This is also by the Baptist Missionary Society. Very good. In the year 1818, right? Very good. So ये आपको याद रखना है. बंगदूत, समाचार, दिग्दर्शन, मीरतुल अखबार. और मीरतुल अखबार का जो ईयर है 1822. ओके, सो रिमेंबर इट ऑल द ईयर्स विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. आपको सीक्वेंस मैनेज करने के लिए भी दिया जा सकता है. एंड ऑल्सो दे कैन आस्क यू इन द पैटर्न ऑफ द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस के पैटर्न में भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट? So this is what that, like the Digdarshan, one sided they will give you, and the other sided that you have to match the Digdarshan with the Sirampur Baptist missions. Okay, चलिए. So किसी भी पैटर्न में क्वेश्चंस आ सकता है. You have to be alert, right? So now 2 to 5. In will type of communication, what is dominant? Will type of communication आपने पढ़ा होगा. So will type of communication, what is dominant? One person, one group, one chain, one nation. Everybody, will type of communication के अंदर क्या dominant है? Giving you the hint also. ये आप पिक्चर में देखकर आप बता सकते हैं. ठीक है, will type of communication, that is what is dominant here, right? So here the right answer, that is very good, one person. So आप पिक्चर में देखिए, यहां पे ये this is the leader. ओके, और ये मेंबर है. मेंबर ए, मेंबर बी, मेंबर सी, मेंबर डी. ओके, and leader here it is, that is what we found generally in the formal organizations. So will network, it is an information flow to and from one central member to the group. This network of communication is found in highly formal organizations. In this network, all information and the message flow through a, right? A जो है वो ये है, और बाकी जो है बी सी डी ई है. Who is at the center at the wheel? ठीक है, ये लीडर है, who leads the group. So a pattern of the communication consists of the one leader who directs the group. Okay, ये ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हायरार्की होती है. So उसमें एक लीडर होता है, और लीडर दैट कंट्रोल्स द ग्रुप, डायरेक्ट द ग्रुप, राइट? So this is what that it is at the center, right? So this is what the will type of communication it is, whereas leader is dominant. Okay, that is, sorry, one person it is dominant. Okay, that can be also the leader. Clear है? जल्दी से बताएंगे. will type of communication it is clear? Okay, very good. Now 2 to 6 mindful journalism से related questions है. The concept of mindful journalism has drawn inspiration from.
माइंडफुल जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट की इंस्पिरेशन जो है कहां से ली गई है? हिंदुइज्म, डाओइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड बुद्धिज्म। एवरीबॉडी, माइंडफुल जर्नलिज्म। और ये माइंडफुल जर्नलिज्म कहां पे काम आता है? एनीबॉडी कैन टेल? माइंडफुल जर्नलिज्म वेयर इट वर्क्स, किस चीज में जर्नलिज्म में किस चीज को हेल्प करता है? व्हाट इट हेल्प्स? यस, वेरी गुड। एथिकल में, राइट? एथिकल प्रिंसिपल ऑफ द जर्नलिज्म, यस, बीइंग ऑब्जेक्टिव, वेरी गुड। एथिक्स में, so the mindful journalism that drawn from the core Buddhist ethical principles as fresh approach to journalism ethics. Please read the explanation. You will get some new kind of the information from the explanation, because explanations are very much important, right? So we have collected here the we have written here the explanations, which is very much important, right? Each line is very much important, right? For the assertion region questions के लिए भी आपका important है। तो आपको अगर इंफॉर्मेशन, अगर आपको आंसर्स पता है तो प्लीज ऑल्सो रीड द एक्सप्लेनेशन, हियर इट इज, राइट? सो इट सजेस्ट दैट बुद्धिस्ट माइंडफुलनेस स्ट्रेटजी कैन बी अप्लाइड पर्पसली इन जर्नलिज्म टू एड क्लैरिटी, फेयरनेस, इक्विटी। ये सारे क्या है? जर्नलिज्म के एथिक्स हैं, ठीक है? नाउ डिसीजन मेकिंग एंड टू ऑफर अ मोरल कंपास टू द जर्नलिस्टिक्स फेसिंग एथिकल डायलेमास इन देयर वर्क। ओके, सो जब भी जर्नलिज्म में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, समटाइम्स इट कम्स एट दैट सिचुएशंस कि हमें उस समय क्या करना है, नहीं करना है, समझ नहीं आता, दैट एथिकल डायलेमा, ओके, इन द जर्नलिज्म प्रोफेशंस, वहां पे आपका माइंडफुल जर्नलिज्म ही काम आता है, राइट? दैट इज व्हाट इंस्पिरेशंस फ्रॉम द बुद्धिज्म हियर इट इज टेकन, राइट? So it comes at a time when ethical values in the news media are in it crisis from a range of technological, commercial, or the social factors, when both Buddhism and mindfulness have gained considerable acceptance in the Western societies, right? So this is what it is accepted, right? Throughout the country, ये हर जगह पे accepted है। और ये mindful journalism बहुत ही important, that is what here ethics of the journalism, here it is whatever we read in the ethics of the journalism, that is about the clarity, fairness, equity, objectivity, ये सारे अनबायसनेस, इतनी सारी चीजें जो बात करते हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज है वो अप्लाई करने के पीछे हमारा जो है वो बुद्धिज्म का ही पूरा प्रिंसिपल जो है एथिक्स में हमारा जर्नलिज्म के अंदर दिखता है। ओके, सो दैट इज व्हाट द concept of mindful journalism. It is totally about the ethics of the journalism. Okay, that is totally the Buddhist ethical principles or the phrase approach of the journalism ethics. Here it is, right? It is clear? जल्दी से बताएंगे, क्लियर है? All right, very good. चलिए, so according to the now 227 number question, according to the Habermas, modern mass media are influenced by, अकॉर्डिंग टू द हैबरमास, हमने हैबरमास की थ्योरीज पढ़ी है। कौन सी थ्योरीज है हैबरमास की? एवरीबॉडी, पब्लिक स्फीयर थ्योरी, राइट? वेरी गुड। सो दिस इज व्हाट, यस, सो हैबरमास के अनुसार मॉडर्न मास मीडिया इन्फ्लुएंस होता है अ हाई डिग्री ऑफ एथिकल कंडक्ट, न्यू कल्चरल ट्रेंड्स, मैसिव पब्लिक पार्टिसिपेशन, डी empty political spectacle। everybody, पब्लिक स्फीयर थ्योरी, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा पब्लिक स्फीयर थ्योरी हैबरमास का, डेफिनेटली यू विल आंसर, इट इज वेरी मच इजी। ओके, यस, सो दैट्स द राइट आंसर, दैट इज डी जो है आपका राइट आंसर है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द हैबरमास, दैट इज व्हाट the emergence of the mass press is based on the commercializations of participation of the masses, right? So this is what it is in the public sphere. Consequently, this extended public sphere lost much of its original political character in the favor of commercialism and entertainment, right? So this is what here talking about the modern mass media it is. So modern mass media, that is what here, that is digital media, we can see, okay, that is what it is separated now.
as like the Facebook, Twitter, Instagram, and the LinkedIn. These all are the social media platforms which has been separated for their own purpose, right? So this is what all the modern mass media, that is what influenced by the political spectacle, right? This is what the empty political spectacle, that is the public spheres. It is an area in the social life where individuals come together to gather or freely discuss and identify the social problems, right? Throughout the discussion influence the political actions. ठीक है, इस डिस्कशन से क्या होता है, पॉलिटिकल एक्शंस को हम इन्फ्लुएंस करते हैं. बट नाउ द थिंग्स हैज बीन चेंज्ड हियर कि हम पॉलिटिकल एक्शंस को कुछ नहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, उल्टा में. दैट इज व्हाट हियर द मास मीडियास आर गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल. ओके, that is what empty political spectacle. Okay, it is what by the political leaders, each and every channels it is, right? Tea shop talks, right? Very good, very good. ये आजकल जितने डिबेट चाहे न्यूज 24 हो, इंडिया टीवी हो, सभी चैनल्स में यही चल रहा है. दैट इज व्हाट इट इज, दैट ओके, दैट इज एम्प्टी पॉलिटिकल स्पेक्टिकल. क्लियर है? जल्दी से बताएंगे. Yes. So now it is Jean Baudrillard has described mass media as a. ठीक है, जिन्होंने मास मीडिया को डिस्क्राइब किया है वो सारे इंपॉर्टेंट है. हु डिस्क्राइब्ड मास मीडिया एज ए दिस, और जॉन बॉड्रिलार्ड हैज डिस्क्राइब्ड मास मीडिया एज ए व्हाट. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. सोशल पावर हाउस, प्रॉस्पेरस मिडिलमैन, सी political institution, and D speech without response. क्या बात है, जल्दी से आंसर करेंगे. जीन बॉडिलार्ड हैज डिस्क्राइब्ड मास मीडिया एज एवरीबडी. यस, करेक्ट आंसर इट इज, दैट इज डी. डी जो है स्पीच विदाउट रेस्पॉन्स. सो कैसे याद रखेंगे? ठीक है, जीन बॉडिलार्ड जो है दैट मास मीडिया को क्या डिस्क्राइब किया इन्होंने, इन्होंने कहा कि मास कम्युनिकेशन जो है, राइट, और द मास मीडिया जो है, राइट, इट इज स्पीच विदाउट रेस्पॉन्स मीडिया, राइट, स्पीच विदाउट रेस्पॉन्स मीडिया. मतलब वन, इट इज अ लिनियर कम्युनिकेशंस, क्योंकि यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं है. यस, देयर इज नो फीडबैक. That is one-sided communication. It is totally speech. Totally, they speak, they decide, they select the news, right? Audience have no choice to select the program or the select the news, right? They have all the power to select the informations to distribute or disseminate to the public. So this is what here, there is no feedback. So mass media or the mass communication here, it is that speech without response, right? So और इन्होंने फेस टू फेस कम्युनिकेशंस को सबसे ज्यादा पावरफुल बताया है, राइट? सो जॉन बॉडिलार्ड हैड अंडरस्टैंड फेस टू फेस टॉक्स एज ए कम्युनिकेशंस, राइट, एंड मास मीडिया एज नॉन कम्युनिकेशंस. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? सो दे कैन आस्क यू लाइक, आई एम फ्रेमिंग द क्वेश्चंस हियर, ठीक है? यहां पे मैं आपको क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा हूं. डिस्क्राइब मास मीडिया as a, option will be same, right? So this will not be, और यहां पे आपको दे देंगे क्या, नन communications. Okay, so what will be the answer? Just write the right answer, that is non communications. Okay, yes, very good. ये आपको याद रखना है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. ओके, सो मास मीडिया एज ए स्पीच विदाउट रेस्पॉन्स, व्हाट कैरेक्टराइज द मास मीडिया इज दैट दे आर अपोज टू द मीडिएशंस, राइट, इन or intransitive, they fabricate the non communication if one accept the definition of communication as a exchange at the reciprocal space of speech and responses, right? So that is what they are defining. It is totally, that is what there should be the reciprocal of the communication, right? Reciprocal of the communication क्या होता है? What is that? अगर हमने सेंडर से रिसीवर के पास इंफॉर्मेशन गया, तो रिसीवर will also give the feedback to the sender, right? Receiver will also become the sender and sender will also become the
receiver, right? ये चीजें होना चाहिए, that what we see in the digital media also, right? That is two-way communication, that we can comment it, we can share it, we can like it, we can do anything. Okay, that is what here the power of the social media or the internet, that is what here. So it is about the mass media, it is, that is mass communication medium, it is totally about the no response or the speech without response. Okay, chaliye. So this is what for you, ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं, that we will explain tomorrow, ये हम कल explain करेंगे, बस क्वेश्चंस रीड कर लीजिए और समझ लीजिए, this is for you. और when an operation model of communication represents some aspects of reality, it represents what? Stimulation, stagnation, simulation, or stratifications? Everybody जल्दी से आंसर करेंगे, दिस इज फॉर यू. ग्रेट. राइट आंसर जो है आपका क्या है? ओके, दैट इज व्हाट द सिमुलेशंस होगा राइट आंसर, राइट. सो सिमुलेशंस क्या होता है? सिमुलेशन जो होता है दैट इज व्हाट हियर, लाइक फॉर इन द हिस्टोरिकल हिस्ट्री से कोई चीजें आपको मोटिवेशंस मिली, राइट? और आपने यू हैव लर्न सम न्यू स्किल, लर्न सम न्यू स्किल्स. This is what here the simulations is your history, right? That is you have learned from your father. अपने father से, अपने mother से आपने कुछ सीखा, right? That is what the simulations from your fathers, right? That is what it is, that you have learned something new from your father's, mother's, friends, relatives, history, grandfather. This is what about the simulation it is talking about. So when an operating model of communication represents some aspects of the reality, अगर रियलिटी की बात करेंगे तो ये हमारा जो है रियलिटी है, दैट इज व्हाट इट रिप्रेजेंट्स द सिमुलेशंस. ओके, यस, दिस इज आल्सो कैन बी कंसीडर्ड एज द राइट. वेरी गुड. लैंग्वेज के टर्म्स में भी, ठीक है, लैंग्वेज के टर्म्स में भी हम सिमुलेशन को समझेंगे. यस, वेरी गुड. दैट इज व्हाट वी लर्न द लैंग्वेज, और हम लोग मदर टंग जो भी बोलते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट हियर, दैट इज व्हाट द सिमुलेशंस दैट वी लर्न फ्रॉम द एंशिएंट. हमने प्राचीन अपनी सभ्यता से, अपनी कल्चर से, राइट, और सिविलाइजेशन से, अपनी हिस्ट्री से, ये सारी चीजें जो हम सीखते हैं, दैट इज व्हाट अबाउट, that is simulations. That is what operating model of communication represents some aspects of the reality, that is simulations. Okay, it is clear? All right, very good. चलिए, so अब हम समराइजेशंस पे आते हैं. एवरीबॉडी, इट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास. समराइजेशन जल्दी से बताएंगे क्या क्या आपने सीखा इन द टुडेज टॉपिक दैट वी हैव लर्न. एवरीबॉडी. Yes, mindful journalism, that is from the Buddhist, it inspiration has been taken. Yes, DD International launched on the 14th 1995, 14th March, sorry, 1945 till now. चार्ल्स, yes, चार्ल्स पियर्स का आपने पढ़ा, that is what the sign, right? Sign as an object. Very good. Or interpretant. Fifth, Ferdinand Saury का आपने symbols, that is symbology by the Ferdinand de Saussure. Okay, everybody जल्दी से रिमाइंड करेंगे और सभी चीजें ध्यान रखेंगे. Yes, 3 levels of the problems by the Shannon and Weaver. 3 levels of problem by the Shannon and Weaver that we have discussed: technical, semantic, and effectiveness. Okay, very good. Number 7,
दिग्दर्शन, राइट, वेरी गुड। दिग्दर्शन दैट इज सीरमपुर के द्वारा, सीरमपुर बैप्टिस्ट मिशन के द्वारा लॉन्च किया गया इन द ईयर 1818, राइट। चलिए, यस। मास मीडिया एज नन कम्युनिकेशन, वेरी गुड। मास मीडिया जो है डिस्क्राइब्ड मास मीडिया, हु डिस्क्राइब्ड मास मीडिया, जल्दी से बताएंगे, बाय एज ए नॉन कम्युनिकेशंस और द स्पीच विदाउट रिस्पॉन्स, मास मीडिया एज ए नॉन कम्युनिकेशंस, यस, वेरी गुड, बाय द जीन बॉडियल, yes, Jean Baudrillard, right, very good, yes, also by the Habermas, हमने जाना, that is what, empty political spectacle, right, very good, Jaber Habermas, yes, next, yes, public sphere model, और बताएंगे any more things that, yes, will type of communication, very important, will type of communication में हमने बात किया, will type of communications में हमने क्या डिस्कस किया था, एवरीबॉडी जल्दी से बताएंगे, in will type of communication, that yes, a person, it is, that is what, one person directs the group, right, or it is dominant, yes, dominant होता है one person's will type of communication के अंदर। चलिए, very good, और any other thing that it has been left, और साथ ही साथ में हमने न्यूज, यस, डीडी वर्ल्ड के साथ साथ हमने, यस, डीडी वर्ल्ड, दैट व्हाट आर द अदर नेम, इट इज डीडी इंडिया, डीडी वर्ल्ड, और एक और क्या था, डीडी इंटरनेशनल, राइट, यस, और साथ ही साथ में हमने, यस, डीडी भारती भी हमने देखा, डीडी भारती 2002, और हमने, यस, डीडी सप्तागिरी, वेरी गुड, दैट इज तेलुगु चैनल्स, राइट, वेरी गुड, और डीडी स्पोर्ट्स, राइट, डीडी स्पोर्ट्स जो है वो कब, 1998, और डीडी सप्तागिरी जल्दी से बताएंगे, डीडी सप्तागिरी 1977, राइट, वेरी गुड, तेलुगु चैनल। चलिए, तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समराइजेशंस, क्योंकि ये आपको याद हो जाता है, ठीक है, समराइजेशन हेल्प यू टू मेमोराइज। चलिए, so this was all about, so I think you have enjoyed the classes and it was very much useful for you, right? चलिए, okay, so thank you to everybody, thank you so much, is there any more doubt, then please ask, अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछिए।